Subscribe now. Hey everyone, welcome back to my channel. If you are here, you are ready to step up your design game. I am Stuti Agarwal and today we are diving into some of the cooler tricks of Canva of images and videos. We will even tackle that ASCII backgrounds with the magic of Canva Pro. Friends, this video is only for the users who have Canva Pro or who have Canva Educational Team because these features are only available in Canva Pro. So let's dive in. और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम बैकग्राउंड फ्रॉम फोटोज एंड वीडियोस रिमूव कर सकते हैं। सो ये फीचर सिर्फ कैनवा प्रो यूजर्स के लिए। फिर लेट्स स्टार्ट। वी गो टू अपलोड्स। सपोज मुझे अपनी ही किसी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है। आई टेक दिस वन। ठीक। और मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ जितना मुझे नीड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने अपने पोस्ट साइज के अकॉर्डिंग इसको और इसको थोड़ा सा फ्रेम के अंदर ले लेती हूँ। फिंगर्स मेरी बाहर जा रही है, राइट, लाइक दिस। अब ये बैकग्राउंड कैसे रिमूव होगा? आई जस्ट क्लिक ऑन दिस पिक्चर, एडिट इमेज एंड आई बैकग्राउंड रिमूवर, राइट। आई जस्ट क्लिक ऑन इट, सी विद इन अ सेकेंड बैकग्राउंड रिमूव हो। अब मुझे इसके बैकग्राउंड में कोई पिक्चर डालनी है। व्हाट आई डू, मैं कैनवा की फोटो वीडियोस वाली लाइब्रेरी में जाऊंगी। आई गो हियर और आई क्लिक हियर, आई राइट हियर बैकग्राउंड और यहाँ से हम कोई भी बैकग्राउंड पिक कर सकते हैं। सपोज आई लाइक दिस वन बिकॉज ये मेरी ड्रेस से मैच कर रहा है। व्हाट आई डू, मैं इस पे क्लिक करके आई जस्ट सेट इमेज एज बैकग्राउंड। सी, इज इट लुकिंग गुड? अब सपोज मुझे इस पे टेक्स्ट लिखना है। व्हाट आई डू, टेक्स्ट पे जाऊंगी और अभी के लिए आई एम यूजिंग एनी ऑफ दीज फॉन्ट्स। ओके, सपोज आई वांट दिस वन, दिस इज गुड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं अपने चैनल के लिए कह रही हूँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अब यहाँ से आई जस्ट यूज अ लोगो। सी, दिस इज माय लोगो और मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देती हूँ अगेन। सी, आई पुट इट हियर। इज इट लुकिंग गुड? तो हमने यहाँ एक पोस्ट पूरा रेडी कर दिया, जस्ट अ बैकग्राउंड रिमूव। नाउ अब हम वीडियो के लिए कैसे सेव करेंगे? अगेन वी गो टू वीडियोस एंड आई पिक, सपोज हम टेक में जाते हैं और यहाँ से कुछ शॉर्ट वीडियो पिक करते हैं। सपोज आई एम पिकिंग दिस वन। अगेन मैं इसको पूरा एडजस्ट करूंगी अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। अगर मुझे यूट्यूब साइज चाहिए तो यूट्यूब साइज के अकॉर्डिंग, बट अभी मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट लिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आई जस्ट एडजस्ट द होल वीडियो। ठीक है, अगेन आई क्लिक ऑन द वीडियो, आई डू एडिट वीडियो एंड आई डू बैकग्राउंड रिमूवर। कैन यू सी, विद इन अ क्लिक? अगर हमारा वीडियो लॉन्ग होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा एडिट होने में बैकग्राउंड। अभी हमारा वीडियो शॉर्ट था तो विद इन सेकेंड हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। नाउ नाउ यू कैन सी, अगर मैं इसको प्ले करती हूँ इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं, प्ले, राइट। बट अगर मैं इसके पीछे कोई और बैकग्राउंड डालना चाहूँ, सपोज आई टेक दिस वन एंड आई सेट वीडियो एज बैक। नाउ सी, आई प्ले फॉर यू हाउ कूल इट इज। ऐसा लग रहा है कि वो विजुअली यही सब देख रही है, राइट। सपोज आई डू कॉपी पेस्ट एंड अब मुझे एक और दूसरा बैकग्राउंड देना है तो मैं इसको थोड़ा साइज छोटा करूंगी, इसको मैं डिलीट करूंगी एंड सपोज आई पिक दिस वन, दिस इज लुकिंग गुड। अगेन आई डू सेट वीडियो एज बैकग्राउंड और इसको मैं वापस उसी साइज में कर देती हूँ। लेट्स प्ले, सी हाउ कूल इट इज। कैन यू सी, एक ही क्लिक से हमने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया।
Let's explore other features of Canva. Suppose I'll just show you with a picture. अब कोई भी पिक्चर यहाँ से पिक कर लेते हैं, सब बैकग्राउंड्स. सपोज आई एम टेकिंग दिस पिक्चर. ओके, और मैं इसको अपने कैनवा के अकॉर्डिंग स्केल कर लेती हूँ. नाउ मुझे ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए. आई जस्ट वांट दीज पीपल एंड मे बी दिस सोफा. सो व्हाट आई डू, एडिट इमेज, और मैं बैकग्राउंड रिमूव करूंगी. सी, दिस इज नाइस. एंड व्हाट आई डू, मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ. आई चूज सम अदर बैकग्राउंड. सपोज आई टेक लिविंग रूम. This is such a cool trick we can do. So I'll tell you a new feature. Suppose I'm picking this. Okay. और मैं इसको यहाँ सेट कर लेती हूँ. Fine. अब मुझे इसमें से ये जो टेक्स्ट है ना, सेल्स और चैनल्स, मुझे ये चाहिए. What I'll do, I'll go to edit image. I'll write grab text. यहाँ आप ये ऑप्शन देख सकते हैं. I'll do grab text. और जो जो टेक्स्ट मुझे चाहिए, I click on it. Sales and channel, both I want. I'll do grab. See how it will work. मैं आपको दूसरे पेज पे ये टेक्स्ट पेस्ट करके आई शो यू. सी, कॉपी, पेस्ट. यहाँ हमारा फॉन्ट भी नहीं चेंज हुआ. एज इट इज वो फॉन्ट पिक होकर आ गया. वी जस्ट हैव टू पिक, कंट्रोल कॉपी एंड पेस्ट. और हम इसको किसी भी टेक्स्ट में या किसी भी तरीके के पोस्ट में यूज कर सकते हैं. राइट. सेल्स एंड चैनल्स और एनीथिंग एल्स. सी, और इसका अगर हमें फॉन्ट चेंज करना है, सो वी कैन डू दैट ऑल्सो. थोड़ा सा डार्कर टोन ले लेते हैं. Can you see? हमने एक जगह से टेक्स्ट ग्रैब करके हमने कैसे दूसरे पिक्चर में इसको यूज करा. So this was about grab text. Now we'll see some other options for edit image. Okay. Let's suppose I'll take this picture. Okay. And I'll just set image as background. Now इस इमेज में से मुझे ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिमूव करना है. व्हाट आई डू, एडिट इमेज, मैजिक इरेजर, एंड देन बिकॉज ये इरेजर थोड़ी स्मॉल है और टाइम टेकिंग है हो रहा है, इसलिए मैं इसका साइज इंक्रीज करके कि कितना क्लियरली इट विल गेट इरेज. और ये सिर्फ हम किसी फॉन्ट के लिए नहीं, किसी भी इमेज में से कोई भी ऑब्जेक्ट भी अगर हमें रिमूव करना है, वी कैन यूज मैजिक इरेजर फॉर दिस. सी, अभी भी कुछ है ये, वी कैन क्लीन इट लाइक दिस. जस्ट इरेज इट. और अब इस जगह पे यहाँ आपको अपना कुछ लिखना है, यू कैन राइट एडिट. सी, it removed. Can you see? Again, this was magic eraser. I'll show you one more option. Let me explore the library so that you can understand it more better or properly. And let's write food. Okay. It is just to show you. Suppose I'm taking this picture और इसको मैं set images background कर लेती हूँ. ठीक है. अब इसमें से मुझे एक स्पून है जो नहीं चाहिए, दैट इज ऑफ टर्मेरिक. मुझे ये
स्पून नहीं चाहिए. I'll do edit image. I'll go to magic eraser and then इसका थोड़ा सा size I'll increase. और now see, I erase it. Takes time. Mostly 1 minute. See, कितना मतलब क्लीनली इसने रिमूव कर दिया, और जो पार्ट रह गया है इसको शेडो या फिर ये, सो वी कैन रिमूव इट अगेन. तो शेडो भी वी हैव टू रिमूव. कैन यू सी? Wow, such an amazing feature. Okay, so drawing it. Expand. Let's take this. Okay, I'm taking this picture. I'm going to edit image, or I want magic expand, and I want free form expand. So let's check one on one. Good things. See how it expanded the whole picture. One option is this. One option is this. One is this. These are quite similar. And one is this. यहाँ इसने एक ऑब्जेक्ट भी रख दिया अपना. नाउ यू सी आपको कौन सा बैकग्राउंड चाहिए. सपोज आई एम टेकिंग दिस वन एंड आई डू डन. ओके, दिस इज हाउ इट एक्सपेंडेड योर पिक्चर. ऐसे ही हम कोई भी और पिक्चर लेके वी कैन मैजिक ग्रैब इट. लेट्स अगेन once more, let's just try it. Suppose I'm taking this man and I'll do edit image and magic expand. Freeform. Magic expand. Let's see what happens. Okay. This is how it expanded the picture. Can you see? Done. Your actual picture was this. यहाँ उसने एक लाइन डाल दी. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. हमने जहाँ सीखा बैकग्राउंड को रिमूव करना, वीडियो बैकग्राउंड रिमूव करना, और कुछ मैजिक फीचर्स आज हमने फोटोज के थ्रू जाने. लेट्स सी अगर कुछ रह जाता है. इफ वी जस्ट 2 minutes. So I've told you background remover, magic eraser, magic grab text, and magic expand. So इसी के साथ let's end the video. Thank you everyone. And there you have it. Whether it's images or videos, Canva makes it incredibly easy for you to make stunning videos.
Got any Canva Pro trick up your sleeves? Please share in the comment sections. Also, don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon so you never miss out on any of my updates. Keep creating. I'll see you in my next video. Bye.